Happy morning, dear students. Welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are fine. Yes? Okay. As you know, we have completed all the lessons. The 14 lessons we have science book, those all the lessons we have completed till now. So, what we will discuss today, do you know? No. So, let me tell you the things we will discuss in today's class. Okay, something is remain. We will discuss the answer key of worksheet unit 4 of page number 146 and the answer key of model test paper 2 of page number 147 and 148. And as I'll tell you answers, please complete your book as well, because the questions may come from these worksheets also in the exam. Okay, so complete and prepare for the exam. From the next class we will start revisions. Okay, so now concentrate on the answers of these worksheets. So we will start with the answer key of the worksheet unit 4, page number 146. Please open your book, everyone. Question number 1. Fill in the blanks to describe clay and sandy soil. First, clay soil. This type of soil has plenty of clay. Clay soil does not allow water to pass easily. Clay holds water and becomes sticky. Only some kinds of plants grow in clay soil. Now second, sand soil. This type of soil has plenty of sand. Sand does not hold water. It allows water to pass easily. So sandy soil dries quickly. Few plants can grow in sandy soil. तो clay soil में clay particles ज़्यादा रहता है and clay soil does not allow to pass water easily. Water को pass होने में allow नहीं करता है. Clay holds water and becomes sticky. Because of the water, the clay soil becomes very sticky. और बहुत ही कम plants clay soil में उगते हैं. सैंडी सॉइल में सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा है, उसमें से वाटर बहुत इजीली पास थ्रू कर जाता है एंड दैट इज वाई सैंडी सॉइल जल्दी से सूख जाता है और बहुत ही कम प्लांट्स है जो सैंडी सॉइल में उगते हैं. हैव यू कंप्लीटेड एवरीवन? शैल आई मूव फॉर द नेक्स्ट? ओके. सेकेंड क्वेश्चन. टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. द अर्थ इज मेड अप ऑफ water, land and air. Second, there is more water than land on the earth. Third, the earth receives light and heat from the sun. Fourth question and the last one, the earth takes 24 hours to complete one rotation. Yes, completed? Very good. Now let's move for the third question. Study the diagram and answer the questions. तो पिक्चर को देख के आंसर जो दिया है क्वेश्चंस उसका आंसर देना है. So first question, how many planets are there in the solar system? We all know there are 8 planets in the solar system. Second question, why is Mercury a very hot planet? Mercury इतना गर्म क्यों है? Answer, Mercury is the closest planet to the sun, so it is very hot. तो Mercury सबसे पहला planet है और sun से बहुत नजदीक है, इसी कारण वो बहुत गर्म होता है. Third, name the largest planet. सबसे बड़ा सा planet कौन सा है? Yeah, the answer is Jupiter is the largest planet. Fourth question, which is the smallest planet? सबसे छोटा सा कौन सा है? The answer is Mercury is the smallest planet. So you have to remember largest Jupiter and smallest Mercury.
Next, fifth question. Name the planet surrounded rings. तो ऐसा एक ही planet है. Saturn is the planet surrounded by rings. Very good. Sixth question. Which planet is farthest from the sun? सबसे दूर में कौन सा planet है? The answer is Neptune is farthest planet from the sun. The last question. Neptune is a very cold planet. Why? The answer is Neptune is farthest planet from the sun. So it receives very less heat from the sun and hence is very cold. तो नेपच्यून सबसे दूर है, इसी के कारण सन का जो हीट है वो वहां पर बहुत ही कम पहुंच पाते हैं और इसी के कारण वो बहुत ठंडा है. Have you completed? As you are writing, you have to memorize the questions as well. एग्जाम में यहाँ से आ सकता है. Keep in your mind. Now let's move on for the answer key of the model test paper 2, page number 147 and 148. Are you ready? Question number 1. Take the correct option to complete each sentence. First, materials that are found in nature are called nature material. Second, air pollution occurs when the air contains dust and smoke. Next, third one, water vapor is the gaseous form of water. तो water vapor gaseous form किसका है? Water का. Fourth question, soil that has lots of sand is called sandy soil. Next, fifth one, the movement of the earth around the sun is called revolution. Very good. Completed. Shall we move for the next question? Okay. Second question, match the following. First, evaporation. Evaporation क्या है? Water changing into vapor. तो ये जो प्रोसेस है उसे evaporation बोलते हैं. Next, second, atmosphere. तो atmosphere क्या है हम जानते हैं? Air of air around the earth. Third question, rotation. तो rotation के कारण क्या होता है? Causes day and night. Fourth, revolution. The earth moves around the sun. तो revolution के जब होता है it means when the earth moves around the sun. The last, fifth one, new moon. New moon मतलब अमावस होता है. Okay, cannot be seen मतलब चांद हमको दिखते ही नहीं है. Next, third question, tick the true statement and cross the false ones. तो जो सही है उसको टिक करना है, जो false है उसे क्रॉस करना है. Day follows night because the earth rotates. तो ये करेक्ट है, so that is why I put the tick. Second, the definite path taken by the earth while it moves around the sun is called axis. No, it is called orbit. That is why it is wrong. Next, third question, we cannot see. Can we see full moon or not? Yes, we can see full moon. Full moon means पूनम की रात होता है. So that is why the sentence is wrong. Next, fourth one, there are 9 planets in the solar system. No, it is also wrong because there are 8 planets. Yes or no? Fifth question, the moon does not change its shape. Yes, it is correct. Moon अपना shape change नहीं करता है. Now question number 4, answer in a word. First, the number of days the earth takes to go around the sun once. कितना दिन लगता है एक राउंड लगाने में? 365 and 1/4 days. Second, number of planets in the solar system? 8. Third, a natural material? Milk. You can write any other as well. Fourth, a man-made thing? Paper. Here also you can write any other answer.
फिफ्थ, द सॉइल व्हिच इज रिच इन ह्यूमस। तो कौन से सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होते हैं? यस, इट इज लोम और लोमी सॉइल। हैव यू कंप्लीटेड? ओके, now let us move for the question answers. Question number 5, answer the following questions. First, what is air made up of? The answer is, air is made up of gases, water vapor and living organisms. तो क्या क्या होता है? गैसेस होता है, डिफरेंट टाइप्स के गैसेस, वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। नेम एनी 4 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो कोई सा भी 4 प्लैनेट्स का नाम लिखना है। सो आई हैव रिटन हियर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। यू कैन राइट एनी अदर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं? द आंसर इज, हीट फ्रॉम द सन एंड विंड हेल्प्स वाटर टर्न इनटू वाटर वेपर। तो सबसे पहले जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द विंड एंड द हीट ऑफ द सन। वाटर फ्रॉम द सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स चेंजेस इनटू वाटर वेपर। ओके, नाउ द वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर एंड राइजेस अपवर्ड्स। और वही वाटर वेपर एयर के साथ मिक्स होके ऊपर जाने लगते हैं। Then what happens? When the water vapor reaches a certain height, it cools and changes into tiny water droplets. तो वो वाटर वेपर कुछ दूर जाने के बाद वो ठंडा हो जाते हैं and they changes into very small water droplets. These tiny drops of water form clouds. और इसी जो छोटा छोटा टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, इसी से ही क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। डिड यू गेट? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, व्हाट इज द अर्थ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन क्या है? सो द आंसर इज, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन in an orbit is called revolution. So we all know the earth has 2 types of movement, one rotation and another revolution. तो revolution क्या है? The movement of the earth around the sun, okay, on orbit. Next, 5th question, list 3 uses of soil. soil का कोई सा भी 3 use लिखना है। The answer, first, soil gives support to plants by fixing them with the help of roots. तो plants को वो support करता है। Okay? Second, soil is home to many animals. So animals, बहुत सारे small living things, they live in the soil. The last, soil is used to make glass and cement. तो ग्लास बनाने में और सीमेंट बनाने में सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। Have you completed? Very good. Thank you very much all the students. Take care of yourself and prepare for the exams. Bye bye.